Jai Swaminarayan, myself Kumudini Nalauri, Atmi Green School, Standard 6, Subject Maths, and now we are clearing the concept of proportion. So I have taken the example of third, that is Ashma and Pankhuri. So we are discussing that they have taken 20 rupees, 20 hair clips they have taken and rupees 30. Ashma gives 12 rupees and Pankhuri gives 18 rupees. Now the ratio of the ratio of money given by Ashma to the money by Pankhuri is 12 as to 18, that is 2 as to 3. According to Ashma's suggestion, the ratio of number of hair clips to the to the number of hair clips given to Pankhuri is 10 as to 10. Ashma कहती है कि दोनों सेम सेम आने चाहिए, that is 1 as to 1. बट पंखुरी का सजेशन क्या है कि 8 as to 12. सो अगर हम 8 और 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो इट बिकम्स 2 as to 3. सो देखो, according to Pankhuri the ratio will be 2 as to 3, and according to, if we calculate the ratio of money given by both, so it is the 2 as to 3. So we can notice that the distribution of Pankhuri is correct. Okay, now let's see the next topic. Sharing a ratio means something. See, consider the following example. Raj purchased 3 pens for 15 rupees. Anu purchased 10 pens for 50 rupees. Whose pens are more expensive? So let's start. Ratio of number of pens purchased by Raj to the number of pens purchased by Anu. So it is 3 as to 10. Now see, both cost, it is 15 and it is 50. So it is also 3 as to 10. Then we can say both ratios are equal. So the pens were purchased for the same price. Get it? Fine. So let's start the next example. Rahim sells 2 kilo of apples for 180 rupees. Roshan sells 4 kilo apples for 360 rupees. So whose apples are more expensive? So first of all we take the ratio of weight of apples. So Rahim's apples are 2 kilo and Roshan sells apples are 4 kilo. So 2 as to 4, that is 1 as to 2. अगर हम 2 और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा रेशियो? 1 as to 2. Then next price. So first price is 180 and the other price is 360. So 180 as to 360, we get 6 as to 12, that means 1 as to 2. So the ratio of weight of apples to the weight of the ratio of their cost are same. Okay, since both ratio are equal, hence we say that they are in proportion. They are selling apples at the same rate. Okay, fine. If two ratios are equal, we say that they are in proportion. This is important. जब दो रेशियो सेम होते हैं, जैसे आपने पहले दो वाले एग्जाम्पल में देखा है ना, पेन्स के एग्जाम्पल में और एप्पल्स के एग्जाम्पल में, अगर दोनों रेशियो सेम होते हैं तो हम क्या कहते हैं? वी से दैट दे आर इन प्रपोर्शन. हम ये कहते हैं कि किसमें? प्रपोर्शन में है. एंड यूज द सिंबल दिस 4 dots are equal. Okay, then we can use symbol such like this. Okay, for the first example we can say 3, 10, 15, 50 are in the proportion which is written as 3 as to 10 and 15 as to 50, and is read as 3 as to 10 as 15 has to 50, or it is written as 3 as to 10 equal to 15 as to 50. अब देखो, अगर ये चारों नंबर्स प्रोपोर्शन में होए तो हम ऐसे लिखते हैं 3 as to 10. ये दो डॉट से इसको कहते हैं as is to. Okay, and here also 15 is to 15, and if they are in proportion then we have to say as. Okay, and is written as. Okay, so let's take the next example. A man travels 35 kilometers in 2 hours. Okay, with same speed would he able to travel 70 kilometers in 4 hours? Now the ratio of the distance traveled by the man is 35 as to 70. पहले हम डिस्टेंस का रेशियो लेते हैं. पहले कितना ट्रैवल किया इसने? 35, बाद में 70. तो इसका रेशियो कितना आया?
35:70, that is 1:2. अब सेकंड रेशो लेते हैं हम 2 hours 4 hours. Okay, so 2:4, so it is 1:2. Hence the two ratio are equal. 35:70 is equal to 2:4. Therefore we can say that the four numbers are 35, 70, 2 and 4 are in proportion. Hence we can write it as 35:70 as to 2:4. Okay, and it is read it as 35:70, 2:4. Hence he can travel 70 kilometer in 4 hours with that speed. Okay, fine. So let's start the next one. Now consider this example. The cost of 2 kilo apple is 180 and 5 kg water lemon is 45. Okay, so let's calculate whether they are in proportion or not. The ratio of weight of apple to the weight of water lemon. Apple का weight कितना है 2, water lemon का 5. Now the ratio of cost of apples to the cost of watermelon. तो apple की cost कितनी है 180 और watermelon की 45. तो इन दोनों का हम रेशो लेते हैं. क्या आएगा 45:1. Okay, now here the two ratios are 2:5 and here the ratio is 180:45, so it is not equal. So that is we can say 2:5 and 100:45 are not equal, or we can say here therefore four quantities 2, 4, 180 and 45 are not in proportion. Understand? Okay. Now see the next page. So this is little blur. So please see in book page number 245. It's 55. Sorry. थोड़ा सा ब्लर है ये. अगर आपको सही नहीं दिख रहा है तो प्लीज आप बुक में देखिए. पेज नंबर 255 पे है. So for important point is here, if two ratios are not equal, if two ratios are not equal, then we say that they are not in proportion. अगर दो रेशो इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे, वो proportion में नहीं है. In a statement, proportion of four quantities involved when taken in order are known as respective terms. जो चार टर्म्स हम लेते हैं जब वो प्रोपोर्शन में होते हैं तो इसको क्या कहते हैं, हम रिस्पेक्टिव टर्म्स कहते हैं अगर वो प्रोपोर्शन में है तो. ओके, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इज कॉल्ड एक्सट्रीम टर्म. पहली और लास्ट वाली जो टर्म्स है उसे क्या कहते हैं, हम एक्सट्रीम टर्म कहते हैं. सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर नोन एज मिडल टर्म. सेकंड और थर्ड वाली मिडल टर्म होती है और फर्स्ट और फोर्थ वाली क्या होती है, एक्सट्रीम टर्म होती है. सपोज वी हैव टू टेक 2:3 एंड 4:6 है ना, दोनों रेशियो सेम सेम. तो इसमें 2 और 6 ये आ गई एक्सट्रीम टर्म और 3 एंड 4 ये आ गई कौन सी, मिडल टर्म. ठीक है. अब सपोज ये एग्जांपल देखो 35, 70, 2, 4. अभी मुझे नहीं पता इसमें कौन ये प्रोपोर्शन में, तो इसमें जो 35 एंड 4 ये क्या होगी, एक्सट्रीम टर्म्स होगी और 70 और 2 ये क्या होगी, मिडल टर्म होगी. आ गया समझ में. पहली बात ये चारों टर्म्स है वो क्या है, प्रोपोर्शन में है. ठीक है. तो अगर ये प्रोपोर्शन में होते हैं तो इसको कहते हैं रिस्पेक्टिव टर्म्स और ये पहली और लास्ट की होती है एक्सट्रीम टर्म और ये मिडल वाली होती है सेकंड और थर्ड इज कॉल्ड मिडल टर्म. ठीक है. ओके, सो स्टार्ट एग्जांपल्स. जस्ट गिव मी 1 second. ओके, फाइन. So we will start the example. Example 8. Are the ratio of 25 as to 30 gram and 40 kilo as to 48 gram in proportion. मुझे तो सही दिख रहा है. अगर आपको फिर भी ब्लर हो रहा है तो प्लीज पेज नंबर 255 पे देखिए.
ठीक है।